What's up, guys? So we are here talking about basically the second leg of Newcastle versus Barca. This is our second stream and बहुत सारे थॉट्स है, बहुत सारे व्यूज है कि क्या होगा आने वाले गेम में. सो उस पर बात करते हैं. यू ऑलरेडी नो प्रथमेश. लास्ट वाली स्ट्रीम हमने की थी साथ में, तो बात करेंगे हम लोग कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. आज तो मंडे है, वेडनेसडे गेम होगा. सो क्या लगता है भाई? हम हमारी तो ले ली गई थी फर्स्ट वाले लेग में, तो यू टेल कि तेरे थॉट्स क्या है. So first leg was a lucky escape for us as far as the result is concerned. Football quality wise, bang average game. Very bad defending, attacking, missed a lot of chances. Should have taken some goals maybe, but since it's a knockout round, I think Hansi Flick एक अलग plan से गए or he went quite conservative. He did not go with the suicidal high line that we have seen in the knockout games or the bigger games so far in the season. He took a rather conservative approach. And yeah, as far as the defending is concerned, Ronald Araujo, what a liability. Huge liability. I don't know what the plan is with him. आगे क्या करना है उसके साथ. He's our captain. Lot of expectations were held from him. बहुत उससे उम्मीदें थी लोगों को. But the way that it has turned out with him, that a big mistake in every big game that costs us the tie eventually. Luckily, that has happened very early, and we have come out. जैसे कि अगला गेम जो है, it is going to be a clean slate, just win and go through. So rather lucky in that department. But yeah, we got out of jail, as I Of course, I said. agree कि we played bad, but we were good defensively. But पता है, if we nitpick some of the moments, तो ये जो अराहो वाला मोमेंट था ना, Yeah. मतलब सेम टॉपिक ही बनता है कि what was the reason for you to walk. लोग बोलेंगे कि रफीनिया was there and he could have marked, but having that extra man in the defense makes a lot of difference. So if you अब तो देखेगा कि वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो उतना डीप में नहीं जाएंगे. बट तूने देखा है कैजुअलिटीज बहुत करती है बारसा. एक कैजुअलिटी का नाम याद आ रहा है मेरे को, दैट वाज अगेंस्ट लिवरपूल. तुम सो रहे हो और कॉर्नर टेकन हो गया. सो ये सारी चीजें तो मतलब बुक्स में नहीं आनी चाहिए, बट हम लोग ये काफी बार करते हैं. और ये अराहो की तरफ से हुआ है, आई थिंक और भी लोगों ने ये काफी बार किया है. बट मैं इससे स्पेसिफिकली जानना चाहूंगा कि हमारी मिडफील्ड तो खत्म थी नहीं, खत्म कर दिया था. तो आई थिंक कि उस फिजिकल मिडफील्ड जो दानव और एमएमए फाइटर्स भरे हुए हैं वहां पे, भाई पेड्री इज द ओनली वन जो नचा सकता है, बट एक बंदा नहीं कर पाएगा. तो तेरे को क्या लगता है कि अप्रोच क्या होना चाहिए? आई थिंक कि उनका मिडफील्ड बाईपास करना पड़ेगा, क्योंकि आई डोंट थिंक कि वी कैन मैच द इंटेंसिटी. बट कैंप नो का पिच थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा स्ट्रेच्ड आउट है. एंड आई ऑल्सो थिंक कि कुंडे राइट पे साइड में नहीं है, तो सपोर्ट सिस्टम नहीं है, बाल्डे भी नहीं है. सेम थिंग हैपनिंग जो इंटर मिलान के अगेंस्ट सेकंड लेग हुआ था, अपने पास दोनों बंदे नहीं थे. सो ये बोल देना कि ठीक है हमारे पास बंदे नहीं है भाई, ऑनेस्टली अगर एग्री करे तो व्हाट डू यू थिंक कि मिडफील्ड का क्या जादू चल सकता है, क्योंकि उसमें तो हम खत्म थे. अगर लोगों को याद होगा जिन्होंने पिछली वाली हमारी प्रीव्यू देखी थी, द बारसा एथलेटी सेकंड लेग, उसमें मैंने ये बोला था कि हमें विंग्स से ना खेलकर हमें मिडफील्ड से बॉल चलानी चाहिए, which is what we followed for the most part, and the result in front of everyone's eyes. Great game, probably the best game that we have played this season. Looking not past the result तो चलो हमारे फेवर में नहीं गया. It was not expected that we would win the tie, but इस गेम में I would say we have to take the opposite approach. If you are getting bullied in the midfield, take the midfield out of the equation. We can be equally potent on the wings as well. हमने पिछले गेम सेविया वाले में भी देखा कि विंग्स से we have the capacity to hurt their fullbacks. Joao Cancelo, what a game. Great game. And even when it comes to our fullbacks. One more thing, coming back to your opinion, जहाँ पे तो बोल रहा है विंग से खेलना है. Yeah. ये जो लास्ट वाला गेम था सविया के अगेंस्ट, उसमें लमीन नहीं था.
Yeah. जॉ कैंसेलो वाज ऑन द राइट. तो दोनों जब साथ में खेलते हैं तो प्रॉब्लम्स आती है. I would not play Joao Cancelo on the right. I would play Joao Cancelo on the left, and on the right, I think if Eric Garcia is back for the second leg, if I'm not wrong, and he has been rested in the Sevilla game as well. उसको कोई minutes नहीं दिए गए थे. So if it's Yeah. Lamine and Eric on the right, then I don't have any problems with that. We can easily get through them on the wings. And So you would want yeah, Lamine to just play on the right, and उसके बैकअप के लिए कौन है? Because you need numbers at least midfield area में. sorry, I don't get your question. Like backup where? Right back में किसको खिलाएगा? Eric Garcia. Centre backs Pau Kubarsi and Gerard Martin. Joao Cancelo left back and Eric Garcia on the right. और तू क्या सोचता है? जावी एस्पार्ट को हम स्टार्ट कर सकते हैं लेफ्ट में. What do you think about that talent? Because he was phenomenal against Sevilla. He was amazing. He was amazing, and we can go with this experiment because we did something similar a couple of seasons ago in the Champions League itself, and today we have one of our starting centre backs over there, Kubarsi. We literally did the same thing, playing him against Napoli exactly in the round of 16. This is also round of 16. So I don't see any problem in starting Javi Espart on the right back, पर मुझे नहीं लगता कि Hansi Flick will take that risk of playing such a youngster in such a high volume, high pressure game. What about playing Araujo on the right again? क्योंकि last time Luis Hall तेरे को पता है क्या खेला था. तो अगर राइट साइड में तो एरिक गार्सिया जैसे तू बोल रहा है कि डालेंगे, अगर एरिक गार्सिया सेंटर में बेटर ऑप्शन है तो अराउjo को तो फिर भी राइट में स्टार्ट करवाएगा. Ideally मैं अराउjo को स्टार्ट ही नहीं करवाऊंगा. I will tell you the reason why. Because there are 2 points that I have in mind. First is ball progression, in which currently any of our defender is better than Araujo. And second is countering their striker, Osula, who almost had a great chance against us and he missed that, luckily. So I will still play Gerard Martin. And I think Gerard Martin, when he has started as a centre back, we have not lost a single game yet. And he has settled into that position beautifully. And I will like to give him this run that he has deserved so well. So I will continue with Gerard Martin. अटैक में अगर देखा जाए तो लमीन को बहुत ज्यादा बॉडी किया गया था. You could see 3-4 बंदे उस पर चढ़ रहे थे. रफीनिया का इतना अच्छा गेम नहीं था, बट वो एफर्ट्स मार रहा था ऑफ कोर्स डिफेंसिव ड्यूटीज में भी, और उसके 1-2 चांसेस उसने क्रॉसेस वगैरह दिए. कुछ उसके डिसीजंस इतने सही नहीं थे. राइट की बात हो गई, लेफ्ट की बात हो गई. इट्स ऑलवेज अ क्वेश्चन अबाउट नंबर 9 बिकॉज यू नीड दैट होल्डिंग गाय बीच में. तो फरहान से आई हैव ऑलवेज टोल्ड कि डोंट एक्सपेक्ट, जस्ट लेट हिम बी देयर. इफ ही डज द जॉब फॉर यू इट्स गुड. बट what do you think about the approach when it comes to the forward line? Because that is a question. लमीन अपना काम कर देगा, but दो तो नहीं खेल रहे ना, आगे 3 खेल रहे हैं. तो when it comes to the number 9 position, man, this season has been disappointing, to put it very kindly. If I had to put it in unkind words, your channel will get banned, so I will not go into that. Man, what do I say? The number 9 position, ऐसा लग रहा है कि हम एक बंदा कम खेल रहे हैं इस सीजन. तो I don't know. I simply have to say that we have to pray that okay, our number 9 finishes the chances that they get. Or if we have to, if you have seen जो उसने हेडर मिस किया था, तो those are the chances you have to bury. You have no option. That's how you win the game. So exactly. Or if you want to go down another route, you can try Dani Olmo as number 9, false 9, and Fermin Lopez will obviously start. But I don't see that happening because it's an experiment that is probably risky as well. Because the number 9 is one position against Newcastle that will get bullied like anything by their centre backs. And we need a strong presence there. So Lewandowski, if not for scoring goals, at the very least, I want him there to hold the game up. Because you need that presence, at least striker का खौफ ही नहीं है भाई.
ऑनेस्टली अगर इफ स्पीकिंग सो, बट मेरे को ये लगता है कि गेम मिडफील्ड से ही चलेगी वापस से, बट आई एम नॉट सो कॉन्फिडेंट ऑन ओल्मो बेसिकली. फर्मिन का थोड़ा बहुत डिसेंट गेम था लास्ट में, ऑफ कोर्स पेड्री वी हैव, बट थोड़ा सा ओल्मो पे मेरे को डाउट है. तो आई थिंक द सेम स्टोरी कुड रिपीट अगेन, बट लेट्स सी. Yeah. What's your prediction going forward? क्या लगता है तेरे को? Already 1-1 है. Already 1-1. It's a new game again, and it's at Camp game. Nou, whose capacity has increased, and we saw its result in the Sevilla game. 62,000 supporters. The Animacio stands, the North stands, full, screaming at the top of their lungs. It was beautiful to watch. I predict a 3-1 comfortable victory. Of course, it won't be comfortable because we are not a team, Joe. But I think the scoreline could be. I think it will be a 2-1 kind of. थोड़ा सा edge होगा, and सब में से कि penalties तक जाएगा. I don't have a feeling कि penalties तक जा सकता है. But this is a changed Barca, I think. You have seen Atletico Madrid में, तो वो बारसा मैंने काफी टाइम तक नहीं देखी है जिस हिसाब से we went into the game. So yeah. I think that will be 2-1. For you it's 3-1. So basically we are making Barca go through. तो देखते हैं भाई क्या सीन होता है. चलो guys, see you in the game. काफी बातें हो गई, देखते हैं प्रेडिक्शन सही लगता है या हम लोग पिट जाते हैं. So let's see and next वीडियो में मिलते हैं. Visca Barca.